The next chapter of our discussion in the heat transfer subject is the radiation. So in radiation heat transfer, the first definition of the radiation heat transfer, we will see the total emissivity. What is the total emissivity? The total emissivity is equal to the total hemispherical emissive power of a body divided by the total hemispherical emissive power of a black body. E is the total hemispherical emissive power of a non-black body, or of a, you can say, of a normal body. So this is your total emissivity, that is E upon E of black body. Next is the monochromatic spectral emissivity, that we denote with the help of E lambda. So E lambda is such that if you integrate the E lambda from 0 to infinity with respect to d lambda, lambda is the wavelength, right? For the wavelength, suppose you can say this is the case. So from this to this is d lambda, and if you integrate the E lambda d lambda from 0 to infinity, it will give you the total hemispherical emissive power. Monochromatic emissivity means that is epsilon lambda. That monochromatic emissivity epsilon lambda is equal to the your monochromatic spectral emissive power divided by monochromatic or spectral emissive power of a black body, right? That is E lambda upon EB lambda is equal to epsilon lambda, that is the monochromatic emissivity. And if you solve this, then if I can say that the monochromatic emissivity, that is epsilon lambda, is not a function of lambda. It is not depending upon the wavelength, or you can say the epsilon lambda is a constant. So in that case, the epsilon, that is the total emissivity, is equal to the monochromatic emissivity, and such body in which the epsilon lambda is not a function of lambda, so that body is known as the gray body. And we know that gray body follows the pattern of the black body. How the black body will vary, how the pattern of the black body, similar pattern is of the gray body. So if some graph is given, then for a gray body, as you know that epsilon lambda is not a function of lambda. So for a gray body, I can write that E lambda 1 upon EB lambda 1 at point 1. If some graph is given, so at point 1, that E lambda 1 upon EB lambda 1 is equal to E lambda 2 upon EB lambda 2, because it is independent of lambda. So these ratios will be equal for gray body only. Now we know that for any surface we have, if you give some power, some energy to a body, so three things can happen. This body can absorb some amount of energy, this body can reflect some amount of energy, and this body will allow some of the energy to transmit from it, right? So we can say the total here, the sum of absorptivity, alpha is the absorptivity. The absorptivity means the fraction of energy which is absorbed by the body. Rho is the reflectivity, means the fraction of energy which is reflected by the body. And tau is the transmittivity, that is the fraction of energy that is transmitted by the body. So the sum of alpha plus rho plus tau will be equal to 1. And we know that black body is that body which absorbs all the amount of radiation incident upon it. ब्लैक बॉडी क्या होता है, उसके ऊपर जितना भी रेडिएशन आप डालोगे सारा का सारा वो एब्जॉर्ब करेगा. So for the black body, alpha is equal to 1, and for the white body, your reflectivity is 1, because white body reflects the total amount of energy incident upon it. And we know that all these three properties, that is your alpha, rho and tau, these three will change with the wavelength. When you change the wavelength of the incident radiation, it will change with the surface roughness and also with the temperature, right? So these three will change with the wavelength, surface roughness and temperature. Now let us discuss some important laws in the radiation heat transfer. First one is the Kirchoff law. Kirchoff law says that if a body is in thermal equilibrium with the surrounding, then its absorptivity is equal to its emissivity. That means that a good emissive body, a body which is good in emission, that body is also good in absorption. So
Kirchoff law says that if a body is in thermal equilibrium, means the temperature of that body is equal to the temperature of the surrounding, then in that case your alpha will be equal to epsilon. Next is Planck's law of radiation. Planck's law of radiation says that the monochromatic emissive power of a black body is a function of its wavelength and its temperature, right? So this is a relation of your Planck's law of radiation. याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे Planck's law of radiation क्या कहता है कि emissive monochromatic emissive power of a black body is a function of lambda and its absolute temperature. That means your EB lambda is a function of lambda and temperature. This is the Planck's law of radiation. Next is the Wien's displacement law. Wien's displacement law says that your lambda m into t is constant for a body. Lambda m into t is constant for a body and that constant is 2.897 into 10 raised to power minus 3 meter Kelvin. Right? ये वाला वैल्यू याद रखेंगे. Wien displacement law के आजकल बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो you have to just remember this. Now this delta m is the wavelength at which EB lambda is maximum at a given temperature. Lambda m is that wavelength where the value of EB lambda, that is the monochromatic emissive power of a black body, is maximum. So that delta m into t is constant. So it is equal to 2.897 into 10 raised to power minus 3 meter Kelvin. Next is the Stefan-Boltzmann law. Stefan-Boltzmann law says that the emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. And if you remove the proportionality sign, so the Stefan-Boltzmann law is EB is equal to sigma into t raised to power 4, where sigma is the Boltzmann constant. Its value is 5.67 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square k raised to power 4. Right, this is Stefan-Boltzmann law. Now you know how to solve your shape factor. We will not discuss so much. Shape factor reciprocity relation you have to remember, that is A1 F12 is equal to A2 F21, and the shape factor for, if you talk about body 1, let us say there are n number of bodies in a system, so shape factor of body 1 with respect to 1 plus shape factor of body 1 with respect to second body plus F13 and so on, so the total sum will be equal to 1. This we know. And F21 plus F22 plus F23 plus up to F2n will be also equal to 1. Now let us see what is the irradiation. Irradiation, we denote the irradiation with G. So irradiation is the total thermal energy incident upon a body, and radiosity we denote with the J. So radiosity is the total thermal energy leaving from the body. So we say that the total thermal energy what is leaving from the body is equal to, क्या उस बॉडी से क्या लीव करेगा, फर्स्ट उसका एमिसिव पावर, उस बॉडी का एक टेम्परेचर होगा, उसका एक एमिसिव पावर होगा, प्लस जितना रेडिएशन उसके ऊपर आपने इंसिडेंट किया उसमें से कितना उसने रिफ्लेक्ट किया, दैट इज आल्सो द एनर्जी लीविंग, राइट. सो J is equal to emissive power plus your reflected part of this irradiation, that is rho G. नाउ द सरफेस रेजिस्टेंस याद रखेंगे, सरफेस रेजिस्टेंस डिराइव नहीं कर रहे हैं, याद रखेंगे सरफेस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ए एप्सिलॉन, एंड स्पेस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 f12. Right, suppose you have two bodies, this is body 1, this is body 2, from here this is insulated, from here it is insulated. Let us say the temperature of this body is more, the temperature of this body is less, or the heat is transferred from body 1 to 2 with the help of radiation. So we say that the radiation network diagram, if you have to make it, so the radiation network diagram of this body will be like this. There are three resistance in this case. One is the surface resistance of body 1, then is the space resistance between this, and when the heat comes to this point, then the space resistance of the body, surface resistance of the body 2. So surface resistance of body 1 is 1 minus epsilon 1 upon a1 epsilon 1. Space resistance between them is 1 upon a1 f12 or a2 f21, one and the same thing. And surface resistance of body 2 is 1 minus 2 epsilon 2 upon a2 epsilon 2, and these points are EB1 and EB2. That is the emissive power of a black body, and here also. So the heat transfer from body 1 to 2 will be your EB1 minus EB2 divided by the sum of all these resistance, right? So same जैसे हम लोग कंडक्शन कर रहे थे वही याद आपको करना है, याद रखना है, this is the surface resistance, this is the space resistance.
Now let us say we have the next concept is your radiation shields. रेडिएशन शील्ड क्यों यूज करते हैं? रेडिएशन शील्ड यूज करते हैं आपका रेडिएशन के हीट ट्रांसफर को कम करने के लिए, राइट। सपोज यू हैव टू बॉडीज, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। अभी रेडिएशन शील्ड यूज नहीं किया है, सो हीट ट्रांसफर विदाउट रेडिएशन शील्ड इज Eb1 माइनस Eb2 डिवाइडेड बाय 3 रेजिस्टेंस, इसका आपका सरफेस, फिर बीच में स्पेस रेजिस्टेंस, फिर सरफेस रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा। Now we say that, let us say we insert a shield in it, let us say this shield I insert, that is 3, so एक shield लगा दिया मैंने। Now we have to write what is the heat transfer। अब क्या होगा? Eb1 माइनस Eb2 तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस देख लेंगे एक बार। यहाँ से हीट चलना शुरू होगा तो यहाँ का सरफेस रेजिस्टेंस, फिर 1 और 3 के बीच में स्पेस रेजिस्टेंस, जब 3 पे पहुंचेगा, 3 के इस साइड पे पहुंचेगा तो सरफेस रेजिस्टेंस, यहां से यहां जाएगा तो जब यहां पे आएगी हीट तो फिर से 3 का सरफेस रेजिस्टेंस, फिर 3 और 2 के बीच में स्पेस रेजिस्टेंस, और जब 2 पे टच करेगा तो 2 का सरफेस रेजिस्टेंस। तो 5 रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, सॉरी 6 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। यहां से सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A1 एप्सिलॉन 1, बीच में स्पेस 1 और 3 के बीच में तो A1 F13, फिर इस थर्ड के इस साइड वाले फेस का सरफेस रेजिस्टेंस दैट इज 1 माइनस एप्सिलॉन 3 अपॉन A3 एप्सिलॉन 3, उस वाले साइड का सरफेस रेजिस्टेंस सेम 1 माइनस एप्सिलॉन 3 A3 एप्सिलॉन 3, फिर 3 और 2 के बीच में स्पेस 1 अपॉन A3 F32, तो याद रखेंगे दोस्तों F32, एंड जब 2 पे पहुंच जाएगा तो 2 का सरफेस रेजिस्टेंस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 एप्सिलॉन 2। तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ गया है ना, यहां से रेजिस्टेंस कम था, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो हीट फ्लो कम हो जाएगा, राइट। एक स्पेशल केस आता है दोस्त की रेडिएशन शील्ड की, अगर ये सारे जो भी सरफेस है रेडिएशन शील्ड के अंदर, ये फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, अगर हर सरफेस का एमिसिविटी सेम हो जाए, दैट इज इवन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3 अगर हो जाए, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे दैट हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया विद n नंबर ऑफ शील्ड। अगर n नंबर ऑफ शील्ड लगा दिया देन हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया विद n नंबर ऑफ शील्ड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया विदाउट शील्ड, राइट। हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया विदाउट शील्ड लगा देंगे मल्टी। The next topic of our discussion is the convection heat transfer. This is the last chapter of your heat transfer. So the convective heat transfer is HA delta T, where H is the convection heat transfer coefficient, A is the area exposed, and delta T is the temperature difference. We have two types of convection heat transfer. One is the forced convection heat transfer, other one is the free convection heat transfer, right? Forced convection means the fluid is flowing with the force, some velocity is there and you have to, आप उसको कुछ force से उसको flow करवा रहे हैं, तो that is a forced convection. And free convection means the fluid or the heat transfer is occurring naturally, there is no other force imposed on the fluid, so heat transfer जो हो रहा है वो naturally हो रहा है. We have some dimensionless number in the convection heat transfer. For the first one is the Reynolds number. So the Reynolds number is Vd rho upon mu, where V is the velocity of flow, D is the characteristic dimension, rho is the density and mu is the absolute or dynamic viscosity. So Reynolds number हमको बताता है whether the flow is laminar or the turbulent. So if the flow is through the pipes, so the Reynolds number, if the Reynolds number is less than 2000, then the flow is laminar flow, and if the Reynolds number is greater than 4000, then the flow is the turbulent flow. And if the flow is over some plate, some surface, then the local Reynolds number, that is Reynolds number at a section or at any distance x, is V infinity. V infinity is the free stream velocity, x is the distance at which you want to calculate the Reynolds number, into rho upon mu. If it is less than 5 into 10 raised to power 5, then the flow is the laminar, and if it is greater than 6.5 into 10 raised to power 5, then the flow is your turbulent, right? So this is the significance of the Reynolds number. Next is the Nusselt number. So the Nusselt number is Hd upon K fluid.
Don't confuse with the Biot number. In Biot number, here the K is of the solid, but in convection or in the Nusselt number, here the K is of fluid. So this is HD upon K fluid. The third one is the Prandtl number. The Prandtl number is equal to the kinematic viscosity upon thermal diffusivity, or you can say it is equal to mu Cp by K. Mu is the your again dynamic viscosity, Cp is the specific heat, and K is the thermal conductivity. So this is a Prandtl number. Now the Prandtl number is used to define whether the hydrodynamic boundary layer thickness is more or the thermal boundary layer thickness. So let us find what is the thermal boundary layer. Suppose this is a plate over which some fluid is flowing. The fluid का initial temperature is T infinity, plate का temperature is TW, और हम मान रहे हैं कि प्लेट का टेम्परेचर T infinity से ज्यादा है. जब ये प्लेट जब ये फ्लूइड इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा तो जो लेयर इसको टच करेगी दैट इज द नो स्लिप कंडीशन, और जो लेयर इसको टच करेगी उसका टेम्परेचर हो जाएगा TW, दैट इज ग्रेटर देन T infinity, एंड हीट इज फ्लोइंग इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट्स मिलेंगे, एक आपका थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगा. सो दिस लेयर इज अ थर्मल बाउंड्री लेयर एंड दिस थिकनेस इज नोन एज थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस. So we have some boundary condition that at y is equal to 0 at this plate the temperature is TW and delta square T upon del y square at this point is 0, and at y is equal to delta T इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा T infinity. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपका ये टेम्परेचर TW है, ये टेम्परेचर आपका T infinity है. मान लो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 50, तो जो लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री. जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्योंकि हीट फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर होगा 80, 60 एंड देन अप टू सम लिमिट यू विल गेट 50. तो जब वो जहां पे वो 50 मिलेगा जो जितना थिकनेस होगा उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस और थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा T. So at y is equal to delta T we have T is equal to T infinity, and at that point del T by del y will be equal to 0. There should not be any temperature gradient over there, so del T by del y should be equal to 0. Now if you want to find what is the local heat transfer coefficient or local Hx if you want, then it is equal to minus times K of fluid into del T by del y at y is equal to 0. इस पॉइंट पे del T by del y at y is equal to 0 divided by TW minus T infinity. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. That heat transfer, local heat transfer coefficient when a fluid is flowing over a plate will be equal to minus Kf into del T by del y at y is equal to 0 divided by this temperature difference TW minus T infinity. Now what is the significance of Prandtl number? If Prandtl number is greater than 1, then we can say the thickness of the hydrodynamic boundary layer is greater than your thermal boundary layer. If Prandtl number is less than 1, then the thickness of thermal boundary layer is more than the hydrodynamic boundary layer, and if the Prandtl number is equal to 1, then the thickness of both the boundary layers will be equal. Hydrodynamic boundary layer आप पढ़ते हैं fluid mechanics में, and thermal boundary layer आप पढ़ते हैं heat transfer में. फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट्स बनेंगे, दैट इज हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर. टेम्परेचर डिफरेंस है तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट्स बनेंगे, दैट इज द थर्मल बाउंड्री लेयर. बेसिक अगर कवर करें, सो द रिलेशन बिटवीन योर हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस दैट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा T. Delta T is the thermal boundary layer thickness. So delta upon delta T will be equal to 1.026 into Prandtl number raised to power 1 by 3. ये वो फॉर्मूला याद रखना है. Prandtl number is mu Cp by K और nu by alpha. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. That delta upon delta T will be equal to 1.026 into Prandtl number raised to power 1 by 3, and this hydrodynamic boundary layer equation, that the formula for hydrodynamic boundary layer thickness will be 4.64 into x divided by under root of local Reynolds number. ये formula आपको याद रखना है for the hydrodynamic boundary layer thickness, that is 4.64x divided by under root of Rex. Rex means your Vx rho or V infinity x rho by mu. Now if you solve that this for this temperature distribution exist over this boundary layer, इसका अगर temperature distribution को solve करेंगे तो Blossius के जो result आते हैं that is this one. The temperature distribution will be like this: T minus TW upon T infinity minus TW will be equal to 3 by 2 into y by delta T minus 1 by 2 into y by delta T cube. ये याद रखना है दोस्त, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है.
सेम फॉर्मूला आप कहाँ याद रखते हो, सेम फॉर्मूला आप याद रखते हो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे सेम फॉर्मूला वहां पे आता है, दैट इज 3/2 इंटू वाई बाय डेल्टा माइनस 1/2 इंटू वाई बाय डेल्टा क्यूब, दैट इज यू अपॉन यू इन्फिनिटी का एक फॉर्मूला आता है, याद करो। फ्लूइड मैकेनिक्स में सेम फॉर्मूला आता है, वहां पे होता है यू अपॉन यू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है टी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, सेम फॉर्मूला है 3/2 इंटू वाई बाय डेल्टा टी माइनस वाई बाय डेल्टा 1/2 इंटू वाई बाय डेल्टा टी क्यूब। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये अगर इसको सॉल्व करेंगे डेल टी बाय डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 निकालो तो आपका जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 3/2 इंटू के बाय डेल्टा टी, याद रखेंगे 3/2 इंटू के बाय डेल्टा टी। एंड इफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग ओवर ए प्लेट, किसी प्लेट के ऊपर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका लोकल नसेल्ट नंबर एट ईच एंड एवरी पॉइंट, लोकल नसेल्ट नंबर विल बी hx, दैट इज अ लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू x, जहां पे निकालना है, डिवाइडेड बाय k ऑफ फ्लूइड। तो द लोकल नसेल्ट नंबर का एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग ओवर दिस प्लेट विल बी 0.332 इनटू लोकल रेनॉल्ड नंबर रेज़ टू पावर 1/2 इनटू प्रेंटल नंबर रेज़ टू पावर 1/3, याद रखेंगे, राइट। एक चीज याद रखो दोस्त, प्रेंटल नंबर में तीनों जो चीजें हैं दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, किसी भी फ्लूइड का मटेरियल का ये प्रॉपर्टी होगा म्यू सीपी के, तो प्रेंटल नंबर फॉर ए मटेरियल इज कांस्टेंट, बट द रेनॉल्ड नंबर नसेल्ट नंबर ये चेंज करेंगे क्योंकि इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं दैट इज ऑफ डायमेंशंस, ये डायमेंशन के टर्म आ रहे हैं तो वो एक प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो लोकल नसेल्ट नंबर विल बी hx into x डिवाइडेड बाय k ऑफ फ्लूइड एंड दिस इज इक्वल टू 0.332 into लोकल रेनॉल्ड नंबर रेज़ टू पावर 1/2 into प्रेंटल नंबर रेज़ टू पावर 1/3, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, अभी तक हम लोगों ने देखा था दिस इज लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, right? hx is the local heat transfer coefficient, but if you want to find out that when the fluid is flowing over this plate, what is the average heat transfer coefficient? So the average heat transfer coefficient will be h bar, which is equal to 1 upon L, L is the length of this plate, into integration from 0 to L of hx dx। लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का dx के रिस्पेक्ट में पूरी प्लेट पे इंटीग्रेशन कर दो 0 to L into 1/L, that is the local heat transfer or the average heat transfer coefficient, and if you solve it then you will get that average heat transfer coefficient will be equal to 2 times the local heat transfer coefficient at x is equal to L। इस पॉइंट पे at x is equal to L, इस पॉइंट पे जितना आपका लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा, एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल बी डबल टू दिस, राइट। तो एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल बी डबल टू द your local heat transfer coefficient at x is equal to L। तो इस फॉर्मूले में x का वैल्यू आप L रख दो तो you will get the answer, right? Next is the Nusselt average Nusselt number. This is the local Nusselt number. If you want to find out what is the average Nusselt number on this plate, then it is equal to, इसको 2 times से multiply कर देंगे, that's it, right? एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी 2 टाइम्स हो गया था तो एवरेज नसेल्ट नंबर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये याद रख लो तो ये अपने आप आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.664 इंटू, या अब याद रखना यहाँ पे लोकल नसेल्ट नंबर था तो लोकल लिया था, यहाँ पे एवरेज ले रहे हो तो यहाँ पे भी रेनॉल्ड नंबर एवरेज आएगा, दैट इज वी डी रो बाय म्यू, राइट। यहाँ पे x नहीं आएगा, d आएगा, तो दैट इज अ रेनॉल्ड नंबर रेज़ टू पावर 1/2 इंटू प्रेंटल नंबर रेज़ टू पावर 1/3, राइट। दिस इज एवरेज नसेल्ट नंबर, पेपर में जो पूछा जाए उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ, योर dimensionless number is the Stanton number, and the Stanton number will be equal to the Nusselt number divided by the product of Reynolds into Prandtl number, right? Next is the forced convection in the flow through pipes। अभी तक जो पढ़ा वो था आपका एक प्लेट के ऊपर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, now the fluid is flowing over a pipe। So अगर fluid is flowing over a pipe and you have fully developed laminar flow, आपका फ्लो फुल्ली डेवलप्ड हो गया एंड द फ्लो इज लैमिनार, सो द वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर दैट इज hd by k इज 4.36 इफ द कंडीशन इज कांस्टेंट हीट फ्लक्स, राइट। दो तरह के हीट ट्रांसफर होता है, दो तरह का फोर्स कन्वेक्शन होता है, वन इज द कांस्टेंट हीट फ्लक्स एंड वन इज द कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। इफ द वॉल ऑफ दिस pipe is maintained at a constant temperature, then that type of force convection is the constant wall temperature. In that case the value of Nusselt number is 3.66, and if the fluid is turbulent, instead of laminar, then the value of Nusselt number will be 0.023 into Reynolds number raised to power 0.8 into Prandtl number raised to power n। याद रखना है 0.023 Reynolds number raised to power 0.8 Prandtl number raised to power n, where this n is equal to 0.4 if the heating is there, fluid is heating,
एंड इट इज इक्वल टू 0.3 इफ फ्लूइड गेट्स कूल डाउन। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर कम होगा तो n का वैल्यू 0.3 रखेंगे, अगर फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो n का वैल्यू 0.4 रखेंगे। तो दिस इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ये इससे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, कन्वेक्शन क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे आप लोग तो आपका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कवर हो जाएगा।